लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे आप? फिजियोथेरेपी तब लाभकारी है जब आप एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के साथ समन्वय बिठा के करें जी। फिजियोथेरेपी सिर्फ बिना किसी डॉक्टर की राय या फिर बिना उसके बताए हुए ना करें। अच्छा जी। आजकल जैसे मान लीजिए ऐठन आ गई ऑपरेशन के बाद, घुटनों में जकड़न आ गई, जोड़ों में जकड़न आ गई, तो वो फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं जी। अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट भाई लोग हमारे देख रहे होंगे जिनका काम वो बहुत अच्छा करते हैं जी। लेकिन उनको अगर मार्गदर्शन एक हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। बिल्कुल, यानी जो भी छोटी सी उसमें परेशानियां हैं वो एक विशेषज्ञ अच्छे तौर पे विशेषज्ञ बता दे फिजियोथेरेपिस्ट को और फिर उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं जी। तो फिजियोथेरेपिस्ट कब मालिश करनी है और कब नहीं करनी है ये एक हड्डी रोग विशेषज्ञ बताएगा, उसको करने का ढंग फिजियोथेरेपिस्ट सिखाएगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, यहाँ तक डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे ढंग से हमें हड्डियों के रोगों के बारे में बताया और अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हेल्थ टिप्स। डॉक्टर साहब, हेल्थ टिप्स में हम आपसे जानना चाहेंगे कि हड्डियों को प्राकृतिक रूप से किस तरह स्वस्थ रखा जा सकता है? एक्सरसाइज जी। अब आप कहेंगी कि एक्सरसाइज कैसे, मतलब हड्डियों को अगर आप जितना मसल्स को यूज करेंगी, हमारी मांसपेशियां हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं जी। जितना वो चलेंगी उतनी ही हड्डी हमारी मजबूत होगी उनकी ताकत को संभालने के लिए। बिल्कुल। तो हड्डियां का मजबूत एक्सरसाइज से होता है, लेकिन उसमें एक रोक होनी चाहिए जी। अत्यंत बेलगाम एक्सरसाइज भी जरूरी नहीं जी। तो अपने जिम ट्रेनर, अगर आप जिम जाते हैं, अपने हड्डी रोग विशेषज्ञ से कितना भागना है, कितनी देर भागना है, कुछ लोग साहब 1 घंटे तक भाग ही रहे हैं, तो उतना नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा भागें अपने हड्डी रोग विशेषज्ञ से राय लेके या फिर अपने जिम ट्रेनर से राय लेके। वो लोग खुद काफी ट्रेंड होते हैं कि कितना भागना है, कितनी एक्सरसाइज कोई भी चीज करनी है, वो हड्डी को बहुत अच्छे ढंग से विकसित कर सकता है। एक लिमिट में एक्सरसाइज करें जिनका जी। और डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हमारे दर्शकों की तरफ से, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हड्डियों के रोग के बारे में। डॉक्टर शिवांश त्रिवेदी के साथ हमने बातचीत की। आशा करते हैं आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जल्दी चल चॉकलेट, नहीं तो लड्डू की डिलीवरी लेट हो जाएगी। तुमने किचन में गिरा दिया। एडजस्ट कर ले किचन के साथ थोड़ा सा। चोर 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 है ऊपर छत पे। गीत और विशु की ये हिट स्टोरी, जिसमें एक लव स्टोरी बनने के पूरे आसार, जानने के लिए देखिए एक नया शो दूर से नमस्ते। बोलिए क्या हुआ? कहाँ जाना है? शैतान चौकी। देखो, हमें अभी आगे जाए पीछे कई जगह बिता देते हैं रात, क्योंकि सफर बहुत जल्दी होने वाली है। चलो हमें हवेली ढूंढ लेंगे। टेक्नोलॉजी की करेंगे बातें और आपको शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन।
बदला लेकर चल। हमला नाम परपेंडिकुलर है। फैजल खान हमने बड़े भाई हैं। भागो सर, हम आपका दुकान लूटने के लिए आए हैं। पूरा का पूरा वासेपुर बंद करवाओ। आज़ादी के इस समारोह में हमारा उद्देश्य केवल उन नायकों के बारे में ही बताना नहीं है जो गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल थे। हम उन हजारों नायकों के बारे में भी बताना चाहते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन्होंने गांधी जी के सैकड़ों साल पहले से इस देश में जगह जगह अपनी आज़ादी को बचाने के लिए संघर्ष किया। ये चिता की अग्नि भले ही बुझ जाएगी, पर मेरे हृदय में जल रही प्रतिशोध की अग्नि तब तक नहीं बुझ। हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। लोहे का सीना रखने वाले योद्धा तोपों से नहीं डरते। इस श्रृंखला में दर्शकों को हम जो भारत का स्वाधीनता का स्वराज का जो संग्राम है, जो 450 वर्षों का है, उसको 3 चरणों में हम दिखाएंगे। दर्शकों को बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी स्वाधीनता या स्वतंत्रता के बारे में नहीं पता है। जब तक मैं इन दुष्टों से अपना राज्य वापस नहीं ले लेती, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। ये तो शिवाजी है, इनका संहार करना ही होगा अपनी मातृभूमि के लिए, स्वराज के लिए। ये सीरियल एक साधारण मनोरंजक सीरियल ही नहीं है। इस सीरियल में जो बातें कही गई हैं, जो दृश्य दर्शाए गए हैं, जिन नायकों के बारे में बताया गया है, उन नायकों के बारे में जो तथ्य दिए गए हैं, वो तथ्य और भी जगहों पर, कहीं म्यूजियम में, कहीं लाइब्रेरीज में, कहीं महत्वपूर्ण पुस्तकों में और टुकड़ों में, हर जगह मौजूद है। हमने केवल उसे संकलित करके आपके सामने समग्र रूप से पेश किया है। वैदिक बौद्ध परंपराओं के समान जैन परंपरा में वाराणसी का प्राचीन काल से ही महत्व रहा है। आगम और आगमेतर जैन साहित्य में इस शहर का मात्र उल्लेख ही नहीं है, अपितु अनेक पौराणिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन भी यहाँ मिलता है। धर्म, विद्या और अध्यात्म की नगरी वाराणसी को 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि का गौरव प्राप्त है। चारों तीर्थंकरों की गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान यही हुए हैं। जैन परंपरा के अनुसार वर्तमान काल के 4 तीर्थंकरों ने इस पुण्य सलीला धरती पर जन्म लिया। इनमें प्रथम है सप्तम तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ की जन्मभूमि भदैनी मोहल्ले में गंगा तट पर स्थित प्रभुदास जैन घाट। द्वितीय है अष्टम तीर्थंकर चंद्र प्रभु, जिनकी जन्मभूमि है वाराणसी से लगभग 25 किलोमीटर दूर गंगा तट पर स्थित चंद्रावती ग्राम। तृतीय है 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ, जिनकी जन्मभूमि है सुविख्यात पर्यटक केंद्र सारनाथ। चतुर्थ हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनकी जन्मभूमि है वाराणसी शहर के मध्य भेलुपुर मोहल्ला,
अति प्राचीन काल से ही काशी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सर्व विद्याओं की राजधानी रही है। जैन दृष्टि से तो बहुत ही इसका बहुत प्राचीन इतिहास है। 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के सुपुत्र भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उनके पुत्र और प्रमुख सेनापति जो कि जय कुमार उनका नाम था, उनका स्वयंवर यहाँ के काशी नरेश की सुपुत्री जो राजकुमारी थी सुलोचना के साथ हुआ था। उसका सचित्र वर्णन बहुत ज़्यादा शास्त्रों में मिलता है। तो कितना पवित्र ये नगरी है जैन दृष्टि से, ये सभी लोग जानते हैं। और ये इतना ही नहीं, भगवान महावीर के समय, जब भगवान महावीर का जन्म तो बिहार में हुआ, किंतु उनका प्रवास यहाँ पर काशी में बहुत वह समय तक रहा है। कई बार उनके प्रवास यहाँ पे हुए, उन्होंने प्रवचन यहाँ पे किए, उनका समूसरण की रचना हुई। तो जैन दृष्टि से इसीलिए लाखों भक्त यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना करते हैं तीर्थंकरों की, और श्रद्धा से जाकर के अपने आप को जीवन को कृतकृत्य मानते हैं। 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि होना इस बात का प्रबल प्रमाण है कि वाराणसी जनपद जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। जैन संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो अपने विशाल सांस्कृतिक वैभव को ओढ़े ये शहर 84 deep ravines which served as natural moats, and if he somehow crossed these, he was confronted yet with man-made barriers. There are massive gates like this with spikes to deter elephants attacking the fort. There were also underground passages and sharp turns at every step. The fort was virtually impregnable, invincible. There are many roads that zigzag up the hill, passing through a number of strong gates. One has to climb up and down stairs at several places. The road turns sharply as we enter. A tower with a platform protects this entrance from where the sentries could scan the horizon. Though the gates are primarily built for defense, they were decorated with fine stone carvings. They are adorned with arches and crenellons. The pillars standing along the sides have images of birds and animals, along with motifs encountered in Hindu temples. This fort, with its ramparts and gates built following the canons of Hindu Vastu Shastra, is considered the best example of pre-Islamic Rajput architecture in India. Ranthambore Fort has elements. Each fort of this kind acquires layers of different times through which it passes. And you can see the various layers which the fort of Ranthambore has acquired. And it has become from a patently military defensive fort to a fort which has incorporated other elements of a fort palace complex, or if I can say a fort palace city complex. The Hamir Mahal is the finest example of pre-Islamic Rajput architecture in India. Four stories are built underground and 3 more floors stand above them. Red sandstone brought from Karoli was used here. Tunneled corridors and beautiful verandas are its characteristic features.
Carved stone pillars and ceilings remind of the ornamentation seen in Hindu temples. Hamir Mahal has been decorated simply but tastefully. The simple elegance of Hamir Mahal leaves a deep, moving impact on the visitors. Ranthambore was a new, strong, defendable fort which attracted a lot of people, including a lot of people from the old Ajmer Shakambari Empire, that region, who had fled in different directions. Because of the protection offered, the merchants came there, scholars come there, you have shops, you have houses. In 1293, Alauddin Khilji sent Ulugh Beg to capture Ranthambore. The long siege depleted the stock of food and water. Hamir Dev was constrained to perform a shaka. According to bards who served as court chroniclers, a traitor facilitated the entry of enemy forces. When Hamir was engaged in a fierce battle, rumor spread that he was killed. The queens ascended the funeral pyre. Hamir returned after repelling the attack to see all he loved reduced to cinders. Heartbroken, he ended his life by beheading himself in the Shiva temple. The traitor Rana Mal continues to be hated and reviled till date. A grotesquely large head in his likeness is kept by the entrance where many pelt it with stones, even to this day. Barely a building stands in these precincts that does not bear the scars of warfare. Many have been totally destroyed. Scenes of brutal devastation greet us everywhere. It can be easily imagined what a heavy price was paid by innocent civilians for the ambition and pride of their rulers. In 1516, Mahmud Khilji, the Sultan of Malwa, occupied Ranthambore, but Rana Sanga soon reclaimed it. Later, he attacked Gujarat and vanquished the Sultan of Mandu. The tussle of Rana Sanga with Babur, the founder of the Mughal Empire, continued like a seesaw. Rana never turned to retreat from the battlefield, nor did he accept defeat, and the long period was punctuated with truces and resumption of hostilities.
Badal Mahal, literally meaning the Cloud Palace, seems aptly named as it affords a panoramic view of the sanctuary spread out at the foot of the hill. This residential complex was designed in a manner to keep those who used it cool and refreshed at the height of scorching summer. Some historians have opined that those who dwelt here lived a hard life, facing sudden death at every step. They had neither time nor resources for a life of leisure or pursuit of pleasure. That's the reason why Badal Mahal has minimal decorations. Small alcoves are the only adornments on the walls. At some places, fading traces of paintings in early Rajput style can be noticed. Akbar attacked Ranthambore in February 1569. The artillery was set up on a high hill, facing the fort, to launch a fusillade. Control over this fort was contested and a battle was fought. People suffered greatly. There was a loss of life and the buildings were damaged. Wherever you look around, you see ruins, ruins of pavilions and palaces. There are temples here within these precincts, Hindu and Jain, as well as dargahs of Sufi saints. People throng in their hundreds even today to pay homage to these. The old Ganesh temple, built on the top of the plateau, attracts devotees from all over the land. It enjoys a reputation that equals that of any other historic structure. People who believe in the fort, and this is the joy of the forts of India, is the legends that go with them, and this one is particularly special because you invite the Ganesh, you send a wedding invitation to the Ganesh Mandir. So it is probably the postman who climbs every day to the Ganesh Mandir is possibly the most overworked postman in India today, because all wedding invitations go for those who believe in it. And this is a temple which has some relationship with blessing marriages. The ancient Jain temple has a huge gallery of beautiful statues of Tirthankars. This indicates, beyond doubt, that in time gone by, this site was considered equally sacred by people professing different faiths and drew those who wished to perform austerities. Because there are not too many structures, so it has a very loose planning, so you don't really need to go in a structured way and experience palaces like you do in other forts. It's a very organic kind of setting, so you just enter there and you can sort of explore.
fort has many large ponds fed by main springs. Padmavati Talab is one of the prominent water bodies. These water tanks provided drinking water for the residents during long sieges. Some buildings on their banks were designed as pleasure pavilions. This fort is a priceless part of our heritage, and its preservation poses complex challenges. The conservation challenges come from its scale as a whole. Also, in terms of structures, I guess one would look at restoring whatever is there. And one of the most important aspect of conservation would be interpretation. And another important conservation challenge would be its natural conservation, which is already there in the surroundings in the forest area. So also looking at the flora and the fauna within the fort. This grand canopy was built by Hamir Rai in memory of his father. It has 32 pillars to indicate that he ruled for as many years. The memorial dedicated to Rana Jai Singh reminds us more of his son, Hamir Dev, standing as a testimony in stone to his valor and love of arts. Some visitors have defaced it by inscribing their names and graffiti on its walls. This canopy, like other buildings in the fort compound, has suffered due to neglect. The grand fort, sprawling out and merging with surrounding forest, speaks volumes of the grit and determination of those who built it. Never humbled even in defeat, it is a symbol of the indomitable spirit of the Rajput warriors. यूं तो देश में स्वाधीनता आंदोलन सन 1857 में मेरठ, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहड़ी, सचिंद्र नाथ तथा मनमथ नाथ गुप्ता सहित कई क्रांतिकारियों ने शामिल होकर एक बड़ी योजना बनाई और ये तय किया गया कि सहारनपुर से लखनऊ आने वाली 8 डाउन पैसेंजर से लाए जाने वाले अंग्रेज सरकार के खजाने पर कब्जा कर लिया जाए। 8 अगस्त को असफल होने के बाद इन सभी क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त को सफलतापूर्वक इस घटना को अंजाम दिया। अचानक हुए इस हमले से बौखलाए अंग्रेजों ने एक व्यापक अभियान चलाकर लगभग 40 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया, जिन्हें जेल में घोर कष्ट और यातनाएं दी गईं। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद फरार रहे, जो कि बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में
अंग्रेजों से सामना करते हुए अपने रिवॉल्वर की गोली से वीर गति को प्राप्त हुए। काकोरी दिवस का ऐतिहासिक मुकदमा लगभग 10 महीने तक लखनऊ की अदालत रिंग थिएटर में चला। 6 अप्रैल सन 1927 को इस मुकदमे का फैसला आया। जज हैमिल्टन ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई और अन्य को आजीवन कारावास की सजा हुई। आसमानी बातें बहुत देखी, लेकिन ट्रैक्टर चलाने वाली और खेतों में काम करने वाली सरपंच पहली बार देख रहे हैं। साथ देने के लिए साथ चलना भी तो जरूरी है। कॉर्पोरेट सरपंच, कॉर्पोरेट सरपंच। टेक्नोलॉजी की करेंगे बातें और आपको शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन। झूठ बोलते हैं वो दोनों। एक बार तो हम भी उनकी बातों पर विश्वास कर बैठे थे, किंतु परमवीर ने हमारे नेत्र खोल दिए। इस जंगल की माया अब तक हमारा पीछा कर रही है। जहां देखो कोई ना कोई दुर्घटना घट जाती है। दुर्गेश्वरी, हमें तो भय है कहीं हम अपने भाई को इस मायावी जंगल में खो ना दें। यदि उसने तुम्हारा शीश काट दिया होता तो तुम जीवित होते? कदापि नहीं वत्स। यदि तुम्हारा शीश नहीं होता तो तुम उससे वार्तालाप कर सकते थे। मेरे गुरुदेव ही किसी को अकाल